What the question is saying, assertion reason based question है. Okay, the maximum number of partners in a partnership firm is 50. Okay, by virtue reason बता रहा है कि ऐसा क्यों है, because of as per the Companies Act 2013 the central government is empowered to prescribe maximum number of partners in a firm. Central government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 50. क्लियर, दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं 50. क्लियर. पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसका कोई भी डिस्कशन नहीं है. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म इज 50. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, और इसका रीजन क्या है आपका, कंपनीज एक्ट 2013. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So A is the correct answer of this question. So simple. Now for better understanding of these basics, what you have to do, watch my lecture number 1 as an introduction. इसमें हमने सारे basics proper details के साथ cover up करे हैं, questions भी discuss करे हैं, numericals जो बन सकते थे that also I have discussed. So do watch it to clear your basics efficiently. Do subscribe the channel, scan the QR code for regular updates. Thank you for watching.